Hello everyone, it's been quite a while since I last vlogged, so I thought this would be the best time to do it now. Okay, so getting right to it. So basically, let me tell you the entire journey about coming to Canada, what all it stipulates, and what are the ways that you can prepare for such a life changing ट्रिप बेसिकली। तो मैं जो हूँ मुख्तसर आपको अपने पिछले 4-5 महीनों का एक रन थ्रू देता हूँ, जस्ट सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ सेम्बलेंस ऑफ व्हाट इट इज़ that you need to be prepared for, what you need to anticipate, and what can you better prepare for when you're actually here in the flesh. ओके, तो हुआ ये कि मैं एंड ऑफ मार्च में आई मेड द ट्रिप फाइनली एंड अच्छा, सो वन थिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड हैव टू से कि आफ्टर यू गेट योर पीआर एंड एवरीथिंग सॉर्टेड ऑनलाइन, यू नीड टू बेसिकली गेट प्री अराइवल सर्विसेज। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ तो प्री अराइवल सर्विसेज ज़रूरी नहीं है कि आप देर आर मैनी प्री अराइवल सर्विसेज दैट कैनेडा गवर्नमेंट ऑफर्स यू फॉर फ्री, but you need not take all of them. You can just, my recommendation is just take Access Employment. Those are the folks that really helped me out. So yeah, like do attend those webinars. They do tell you how to customize your CV for a Canadian market. थोड़ा बहुत वो आपको rent वगैरह की भी चीज़ें बता देते हैं. They kind of get you in the mindset of a potential immigrant, like what are the do's and don'ts that you need to be prepared for. So Access Employment, definitely sign up for their free material. Again, you will only be applicable if you have had the PR thing issued to you. अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं मार्च के एंड में आई केम हियर एंड वन थिंग दैट आई हैड डन prior to coming here was setting a stage, and I think setting a stage is like super important. तो होता ये है कि आपको अगर स्टेज सेट करना होता है, you need to kind of have to make sure that the kind of jobs that you want to target, आप 2-3-4 महीने उससे पहले आप देख लें कि what are the key requirements that are expected from this position. For example, the kind of jobs that I was looking for were typically associated with me wanting to get a project management professional certification. काफ़ी इन डिमांड सर्टिफिकेशन थी ये, और मुझे पता था कि हर जॉब जहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशन देखता हूँ, फोरसी करता हूँ, हर चीज़ में PMP इज़ एन एसेट, PMP इज़ एन एसेट वाज व्हाट वाज स्टेटेड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन. नाउ very well knowing about that, I knew that ये certification मुझे देनी है. So while I was waiting for basically my notice period to get served in Karachi, I decided कि मैं PMP एग्ज़ाम दे देता हूँ. I studied vigorously, I internalized the mindset, and I took the certification, and मुझे अल्लाह का शुक्र है I got it. I got through, and that's something that I did in the time that I was already in Karachi. So that was something which was very wise of me at the time. So that being said, अच्छा, फिर मैं basically यहाँ पे now I'm talking about the trip. Ultimately about the trip. End of March I landed here. I came here, and the first month I had basically thought that I'm going to stay at I would take a apartment for a 1 month rental. अच्छा, शॉर्ट टर्म रेंटल तो आपको बेसिकली 1 महीने तक के ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक यू कैन गेट अ शॉर्ट टर्म रेंटल फॉर. सो एनीवे, आई गॉट दिस, एंड ड्यूरिंग दैट फर्स्ट मंथ आई डिड ऑल द इनिशियल शेनानिगन्स. मैंने जाके अपना बैंक अकाउंट खोला, मैंने अपना ओहिप यानी ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, पेंशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, तो मैंने उसमें जाके रजिस्टर करवाया. दैट्स बेसिकली गिविंग यू ऑल द मेडिकल वाली चीज़ें का रन थ्रू. अच्छा, जब ये हो गया, देन आई वॉज इन माई फर्स्ट मंथ, आई वॉज जस्ट डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब, and I was applying day in and day out. Now this is something that I really want to kind of take your attention towards. Scene ये है कि once you get your PR and stuff, right, you are then eligible to apply. Like that's one thing that you can do. Now the thing is, मैंने काफ़ी लोगों को LinkedIn वगैरह भी रीच आउट किया था. टेम्परामेंट हर किसी की मुख्तलिफ होती है. पॉइंट इज़, अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. some were positive, some were negative, some were hella pessimistic. कुछ लोग ने मुझे लिटरली बोला कि यहाँ पे जॉब्स हैं ही नहीं, there is no future, nothing, you will have to step down 3 grades from what you were used to in Karachi,
एंड यहाँ पे जॉब मिलती ही नहीं है, तुम्हें जो है यू विल हैव टू डू और जॉब, यू विल हैव टू डू दिस दैट. नाउ वन थिंग दैट आई रियलाइज इज कि भाई हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है. मैं भी आपको जो टिप्स इस वीडियो में दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपकी भी जर्नी इसी तरह हो. इट्स essentially what you bring to the table and everyone's journey is going to be different. You can't tell a person कि आपको जॉब नहीं मिलेगी. You cannot do that. शायद आपके एक्सपीरियंस में आपको नहीं मिली हुई हो, but depending on what a person brings to the table, they will get what they deserve. And this brings me to my second point. So, and I'll tell you the reality, right? When I was applying for jobs over here in my first month, I was getting zero callbacks, zero. मतलब मैं दिन रात अप्लाई करता जा रहा था. एंड देन आई रियलाइज कि समथिंग इज़ मिसिंग. लाइक आई एम अप्लाइंग लेकिन कोई रिजल्ट आ नहीं रहा. सो क्लियरली समथिंग इज़ मिसिंग. सो देन आई थॉट कि भाई हार्ड वर्क से बेहतर है स्मार्ट वर्क करना. एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग लेस. एंड देन आई स्टार्टेड बेसिकली आई टुक अ पीस ऑफ पेपर, पता नहीं यहाँ पे शायद रखा हुआ हो, आई एम नॉट श्योर. बहरहाल अभी शायद मिलेगा नहीं मुझे. But point is, oh yeah, I think I found it. No. So anyway, point is कि मैंने एक पेपर लिया, random A4 size paper, and I started writing all the companies that I want to target. Don't apply randomly, okay? Don't apply to 50 million companies and यहाँ भी CV वहाँ भी CV. LinkedIn Easy Apply पे तो करें ही मत. Strongly urge you not to apply through LinkedIn Easy Apply. I think that's a scam hoax. At least for me it was. So anyway, so what I did was I did referrals. I basically reached out to people that I knew who are within the market, जिन्होंने या तो अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में काम वाम किया हुआ है. मैंने काफ़ी लोगों को ईमेल भेजा, मैंने अपनी CV भेजी. I said I have relocated and I am eagerly looking for a job. Can you help me in some regard? Many people will say they will help you, but they end up not helping you. Some people try to help you, but they end up not. काफ़ी लोगों ने CV ले ली थी एंड देन दे वर लाइक ओके हम देखते हैं कुछ अगर हो सकता है, उसके बाद गायब. तो आई हैव लिटरली हैड माई फेयर शेयर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज यू जस्ट नीड वन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट, जस्ट वन. बिकॉज मुझे भी आता है एंड ऑफ द डे एक ही जॉब चाहिए ना, मुझे कौन सी कोई 10-12 जॉबें करनी है, जॉबें लॉल. बट एनी वे, पॉइंट इज दैट वंस यू ओके, सो इन माई एक्सपीरियंस आई रीच आउट टू दिस वन पर्सन हु वॉज वर्किंग एट माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड ही बेसिकली गॉट मी इन इंटरव्यू कॉल. अच्छा, मैक्सिमम रेफरल आपको इंटरव्यू तक ही लेके जा सकता है, उसके बाद इट्स ऑल ऑन यू, राइट? सो आई वॉज अप्लाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर. फाइनली आई गॉट दिस इंटरव्यू कॉल रैंडमली आउट ऑफ नो वेयर एंड मैंने इंटरव्यू दिया. अच्छा, मैंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की, मैंने आई वोर माई सूट आई during the virtual interview and I had my CV and I had internalized everything that I wanted to say and how to say it and those kind of things. Bahral, interview हुआ, they liked me, literally they like the vice president and the VP level people took my interview and then उसके बाद एक हफ्ते सन्नाटा. I was like यार what the hell is going on, ये फिर से अभी मुझे आश्रय में रख के अब इंटरव्यू के बाद भी अगर if I'm not getting a job then something is definitely fishy. अल्लाह का शुक्र है within 1 week I got an offer and the story doesn't end there. I got a 2-month contract. Now the thing is कि the line of work that I do it is basically system implementation, it's IT related, right? So 2 महीने का contract मुझे मिला and I was like okay, something is better than nothing. I took it and basically उसमें था ये कि 60 days 2 months, right? उसमें 15 दिन जो था वो ऑन साइट का काम भी था, बट लकीली दे प्रोवाइडेड मी अ होटल एंड एवरीथिंग, ऑल दोज अमेनिटीज़ एंड द पे वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड. It was literally matching my pay grade, it was matching my work experience. I didn't have to start from scratch, alhamdulillah for that. So anyway, that happened and then मैंने 2 महीने वो कर लिया and मुझे थोड़ा सुकून मिला because at least money was coming in, right? The PKR savings weren't depleting as rapidly as otherwise they would have. So उससे मुझे थोड़ा सुकून मिला and then अच्छा, before you knew it 2 months went by and I was back to unemployment and I'm like oh shit, अब तो मैं फिर से back to square one. Yes, I had a boost in my bank but I came back to zero in terms of employment, right? I started applying again but this time something changed. Something rapidly changed because I had updated my CV now with Canadian work experience and it made a hell of a difference, like it truly did. And I was like okay, maybe that was the secret sauce that was missing.
तो बेसिकली मैंने 2 ब्रिजेस लिए, एक रेफरल का ब्रिज और फिर दूसरा कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जब आ गया मेरी सीवी पे तो उससे गेम ही चेंज हो गया. आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल बैक्स फ्रॉम हम्बर रिवर हेल्थ, फ्रॉम सनोफी, फ्रॉम रोश फार्मास्यूटिकल्स, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, from University Health Network, like you name it, like because my sphere is healthcare, so I had applied to all these places and I was getting callbacks from them, and it was very heartening and एक किस्म की validation मुझे मिल गई थी कि चलो it wasn't my CV, it wasn't me, it was just the fact that I was missing that secret sauce before and now I have it. बहरहाल मैंने फिर बेतहाशा इंटरव्यूज़ दिए. फर्स्ट राउंड क्लियर किया तो दूसरा राउंड क्लियर किया तो फिर वेटिंग. And then ultimately I landed up a job where I am right now, and finally I made it through and I was very very happy for that because अब मैंने बहुत मेहनत की थी and I was very desperately looking and then I finally got it, and now I had to step up my game. अच्छा, इसके दौरान I was kind of living at a relative's house, but then I also wanted to flip the script and kind of move into my own apartment, right? Because अपनी space आपको ultimately चाहिए होती है. तो finally, अच्छा यहाँ पे एक और सीन ये था, यहाँ पे रेंट मार्केट बहुत शेडी और डिंजी हो जाता है. बेसिकली लैंडलॉर्ड जो है उसका काफ़ी डिस्ट्रस्ट है यहाँ के टेनेंट्स के ऊपर, और सो आई हैव बीन टोल्ड, बिकॉज मैनी पीपल डिफॉल्ट. और होता ही है कि मैनी landlords are reluctant to give a job to a person who's not employed. So at the time जब मेरा 2 महीने का contract ख़त्म हो गया था, I was looking for a job and I was also looking for an apartment and I had the savings to pay up. लेकिन all the landlords would be like, नहीं, अगर job नहीं है तो hell no, we're not giving it to him because he doesn't have a job. They thought कि I'm the ideal new immigrant defaulter type person. तो उन्होंने मुझे, और क्यों ही वो मुझे सेकेंड, मतलब वाई वुड दे गिव मी अ चांस, राइट? वाई वुड दे? आई वॉज फिटिंग द प्रोफाइल ऑफ अ न्यू कमर विदाउट अ जॉब, तो क्लियरली वो भी थोड़े एप्रीहेंसिव हो गए थे. बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स लाइंड अप एंड आई गॉट अ जॉब, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट. आई बेसिकली फाउंड वन एंड so then that happened and अल्लाह का शुक्र है अब मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे. And fast forward, things materialized and obviously there were ups and downs, but the one thing that you need to know is, as a lesson learned, you need to be positive, you need to be optimistic, and you need to be willing to do the hard work to get where you need to be. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अंधाधुन पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म लेके आप एक डिलूजनल स्टेट में हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. आई एम सेइंग कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू अप्लाई एंड you will also have to have a saving mindset. Don't come here with a lot of savings and think that it's going to last you forever. No, you should have a income source and then maybe you can splurge a little. लेकिन point is कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता है. Like you have to think about you have to look at the greater picture. And yeah, and then okay, one more thing. So there will be moments where you will be hella distressed. जब मैं यहाँ पे आया था, I was feeling like a fish out of a pond which is now in a different aquarium, and you can't help but notice कि आपको थोड़ी feelings आती हैं कि यार मेरी तो अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ पर भी, wherever you're from, and then you might be second guessing yourself, you might be doubting yourself, but trust me, it's worth it. So yeah, you have to pick up yourself at those moments of gloom, and you need to surround yourself with positive people. Luckily, I'm blessed to have positive family network over here, as well as some very close friends who are like my mentors and guiding angels really. तो उस sphere में रह के ना फिर you can only flourish. That's one thing that is a given. Then you need to be pretty professional in the kind of work that you do. And interviews का scene ये है कि आप जितने interviews देंगे उतने आप बेहतर होते रहेंगे. You also get a feeling कि अच्छा interviews में क्या पूछा जा रहा है, what kind of questions are coming up, those kind of things you can prepare. So yeah, and then all these kind of things, they really help shape you into an individual who can then finally make the move. And yeah, and then I'm just thinking of any other things. Obviously फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं फिर आप देखते हैं यहाँ पे सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त है in terms of all the little things, rules, regulations, people are following them, there is an active happy culture going on. कोई यहाँ पे तपावा नहीं है, वही गैस बिजली के मसले नहीं है. People have moved way beyond that.
you know, those kind of roadblocks in life. So yeah, it's definitely worth it, and I'm still kind of exploring way more things, and abhi jaake mujhe apna license bhi karwana hai. There are many things that I still need to unfold over here. It's not like I figured it all out. Abhi literally mujhe apna yahan pe furniture वगैरह भी खरीदना. I need to buy a sofa. So you know, those kind of little things, but that'll happen for sure. But I'm just glad कि मेरा जो major chunk है, जो anxiety और worry का था, यानी कि apartment and job, अल्लाह का शुक्र है, that's all dealt with. So I'm pretty grateful, and I'll just end this video by just giving you all the positivity and optimism that if you're on the fence, then you know you don't have to be. And lastly, I'll end this video by showing you my beautiful view, so you guys can also realize कि भाई, there is a world out there waiting for you, and worthy of the commitment and the dedication that you live your life with. तो आपको आपका सिला मिल जाएगा sooner or later. Just be optimistic and work towards it. Okay? With that, signing out.